Thank you for joining us here on This Is Exclusive Polling Day here on Republic. We've been tracking the voting trends, turnouts this morning. All through the evening, those numbers continue, but we have some breaking news on This Is Exclusive. They've done it again. We have the details coming up. Exclusive pictures from Afghanistan. And some details, some scoops from battleground Bihar. Some key players joining us on the show. The newsmakers this polling day, but here are the headlines first up. There's a record voter turnout in Bihar. It surpassed all numbers. Nearly 15 to 20% more polling than what was seen in 2020, highest in almost 25 years. It's one of the headlines of this election. Prashant Kishore was seen as the next big thing, big change, big player. It appears that he's been dumped even by his own party leaders. Some of them are joining us on the show tonight. The drama, election day drama. Bihar Deputy Chief Minister's convoy attacked by the RJD. Full face-off. CEC getting in. Police officials pulled up, district administration in a tizzy. All the action on Republic. हाँ, राजद का एमएलसी अजय जी और जदयू से गया है कांग्रेस में सुजीत कुमार, दोनों मिलके मारपीट दिखा रहा था, गंजी फाड़ दिया, सबको अति किया. Election Commission ordering an investigation into the drama in Lakhisarai. Probe has been ordered by the CEC, Gyanesh Kumar. Ladies and gentlemen, it's the biggest irony. We here at Republic kept saying again and again and again that you cannot trust Pakistan. India doesn't trust Pakistan, and we said Afghanistan should not trust Pakistan. There have been 3 sets of talks ongoing. They started with Doha, didn't work, went to Turkey, Istanbul, didn't work, and said they'll go back to Turkey. And as the talks begin today, Pakistan has opened fire again. Believe it or not, Pakistan has opened fire again on Afghanistan, and this is happening as we speak. And there's complete mayhem at the border. Pakistani forces have once again opened fire. Exclusive pictures, let's put it that way, exclusive pictures. Exclusive pictures from Afghanistan-Pakistan border. Pakistani forces have opened fire on Afghan forces in Kandahar. Pakistani forces have opened fire on border guards of Afghanistan in the Lukman village of the Spin Boldak district of Kandahar. They've also launched mortar attacks. Look at those pictures. Let's play the full video once again. Full video with the audio, please. Chandrakala? Let me go across to Chandrakala joining us on the live broadcast. Chandrakala, what more details do we have? Where did this happen? Why did it happen? What kind of reactions are we seeing from the Afghanistan government? Well, as you must be aware, of course, the talks are underway today. A fresh round of talks has begun in Istanbul. And right now, what we are learning is that the Pakistani forces have once again opened fire on Afghan forces in Kandahar. It's complete mayhem. We have also received few videos where people are actually running. Of course, I'm yet to share the videos. But what we are learning is that the Pakistani forces fired on border guards of Islamic Emirate of Afghanistan in the Lukman village of the Spin Boldak district
district in Kandahar and later launched mortar attacks. Well, what we are learning from our sources is that the Pakistani side targeted a civilian house in the area, and Afghan forces have not responded. Where the local officials have not yet commented on the incidents. We're still awaiting the response from the Afghanistan side. For the matter is that the fact of the matter is that the talks are underway in Istanbul, and we have seen that just before the talks, that's yesterday, in an interview, of course, the Pakistan Defense Minister Khwaja Asif has once again engaged in war rhetoric, saying that he has given a war threat to Taliban before this particular peace talks in Turkey, which is right now underway. And he has also accused Kabul of harboring militants and turning a blind eye to cross-border attacks. And now, while Afghanistan has definitely countered the allegation by condemning Pakistan's drone warfare on civilians, and now we could see that a fresh clashes have broken out between both the sides in Kandahar province. And at the same time, the talks are underway. So, yes, a very, very, a very, very volatile situation in the border area right at this moment. The fact that the defense minister has also threatened Taliban of, obliterating Taliban regime completely. And if necessary, they would also attack cross-border, which is something that New Delhi is looking at critically, because this comes at a very crucial time when relations between India and Pakistan is completely down the hill. And now that a fresh round of talks has again, fresh clashes has again broken between both the sides, creating complete mayhem in the border area. Back to you. Yes. The firing was on border guards, so there's a typo. We'll correct that. Not bodyguards, but border guards. Small correction there. While we do that, let's move on and get you the big story. From Bihar, let's also move on now. Let's switch tracks. Okay, the big headline today, elections is on. Prashant Kishore being dumped just before elections. Some of his candidates have dumped him. Some have joined the BJP. Some say they just don't want to work with him. Now, Prashant Kishore, of course, has been claiming that BJP has been trying to coerce his candidates, trying to buy out his candidates. Fact is, one such leader who's also a candidate who had signed up to fight for Prashant Kishore has jumped ship. He's joined the BJP. Now, it is a big embarrassment for Prashant Kishore. Sanjay Singh has joined BJP just a day before polling. Now, here's the reality. Just to give you an idea, I'm not getting into the spokespersons, the party workers, the administration of Jan Suraj, who have also quit. But there are candidates. Let's look at some of them. Sanjay Kumar Singh Munger has joined the BJP. Shashi Shekhar Sinha Gopalganj jumped ship. Satya Prakash Tiwari Buxar jumped ship. And Akhilesh Kumar has also quit. But let me go across to Sanjay Kumar. Now, why are they dumping Prashant Kishore is the question. Sanjay Singh, the man that you see there from Munger, joining us on the show this evening. Sanjay Singh, हमारे साथ लाइव है. संजय सिंह जी, आपने रेजिग्नेशन क्यों दी? आपने जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा क्यों दी और आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? मेरी आवाज आ रही है संजय सिंह जी? जी नमस्कार। नमस्ते। आपने धोखा क्यों दिया? धोखा प्रशांत किशोर को धोखा क्यों दिया आपने? धोखा मैंने प्रशांत किशोर जी को नहीं दिया महोदय। धोखा संगठन के लोगों के द्वारा दिया गया मुझे, और समय का जो पुकार था, हाँ, उस स्थिति में मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। क्या किया उन्होंने कुछ आप बोल रहे कि उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था आपको और नहीं किया? नहीं, प्रॉमिस की बात नहीं है। हम लोगों के नेता थे प्रशांत किशोर जी, उनका कार्यक्रम मुंगेर विधानसभा में एक भी नहीं हुआ। हाँ जी। ना रोड शो हुआ। मैं उनके जेएसपीटी के लोगों से आग्रह करते रहे कि भाई नेता का प्रोग्राम क्षेत्र में होनी चाहिए। हाँ जी। पार्टी के वरिष्ठ लीडरों का कार्यक्रम होना चाहिए, और एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। ना जो है सो कि संगठन के लोग चुनाव में मुझे किसी स्तर का जो है सो कैंपेनिंग में मदद नहीं किया। एक चीज बताइए, इतने सारे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं?
क्या हो रहा है ये जनसुराज पार्टी में? बहुत लोग नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों को संगठन के माध्यम से मदद नहीं हो रहा है, परेशान हैं, वो समझ पा रहे हैं कि जनता के बीच प्रशांत जी के कैंपेनिंग को चलाना था और संगठन के लोग साथ में पार्टी में रह करके पार्टी के विरोधी काम कर रहे थे और हमने इस मैसेज को पटना तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन जेएसपीटी के लोग डीआई जो थे उन्होंने मिली भगत करके नेता को नहीं बताया और मैं तंग आकर करके ऐसा कदम उठाया। उनका बोलना ये भी है कि आप पर दबाव था और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उन पे प्रेशर था छोड़ने के लिए। ऐसा कुछ प्रेशर था आपके ऊपर? बीजेपी के लोग आपके टच पे थे क्या? बीजेपी के लोग आपके साथ टच पे थे? नहीं, कोई टच नहीं था। कल सुबह की बात है। अगर ऐसी बात होती तो मैं रोड शो क्यों किया? 4 तारीख तक प्रोग्राम जो था पार्टी का प्रचार था इलेक्शन कमीशन के समय अनुसार। 4 तारीख तक हमने कैंपेनिंग किया, रोड शो किया, पार्टी के हर कार्यक्रम को किया। 4 तारीख के रात में पूरे पार्टी के नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन डीआई जो थे आयुष नाम के व्यक्ति जो जिला को देखते थे, उन्होंने संपर्क साधने नहीं दिया। एक चीज बताइए, आप कैंडिडेट थे, आपको आज लड़ना था और आपने लास्ट मिनट में मुंगेर से अपने इस्तीफा दे दी। ये कैसे होता है कि आप एक दिन पहले आप पुल आउट करते हैं? आपने कुछ तैयारी की होगी, इतना मेहनत लगाया होगा आपने। पूरी तैयारी की थी, चुनाव लड़ने के मूड में, पूरा मूड में थे, लड़ ही रहे थे, लेकिन जब बूथ पे जाना हो, साथी का मदद नहीं हो, पार्टी के संगठन का मदद नहीं हो, तो उस हालत में एक कैंडिडेट क्या कर सकते हैं 404 बूथ पे? नहीं, क्या मदद नहीं की आपने? थोड़ा बताइए ना, क्या मदद प्रॉमिस की थी, क्या मदद नहीं की इन्होंने? जितने बीएलओ का सूची बना हुआ था, बूथ पे पोलिंग एजेंट को जाना था, सारा वोटर लिस्ट लेके जाना था, उस सारे कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं के द्वारा, स्थानीय जो नेता थे उनके द्वारा मुझे मदद नहीं किया गया, तो मैं उस हालत में कैसे चुनाव लड़ता? अच्छा, उनका कहना था प्रशांत किशोर का कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव है और पैसा दिया जा रहा है। क्या आपको पैसा दिया गया था? एक एलिगेशन आया था आपको। क्या किसी ने पैसा दी थी ज्वाइन करने के लिए या छोड़ने के लिए पार्टी से? यहाँ की जनता जानती है, मैं पिछले 11, 16, 21 के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जीता हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई किसी तरह का एलिगेशन नहीं है रिश्वत के मामले में, और प्रशांत किशोर जी का मैं सम्मान करता हूं, वो हमारे नेता है, रहे हैं नेता, तो मैं उनके बातों को मैं जवाब देना भली भांति नहीं समझता हूं, लेकिन आज तक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का और रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इतने सारे पार्टी को जिताया है उन्होंने, बीजेपी से लेकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर बहुत सारे पार्टी, जगन मोहन रेड्डी का पार्टी, वाईएसआरसीपी, सब पार्टी का मदद की है इन्होंने, लेकिन उनका खुद का पार्टी जो है, कैसे हो सकता है कि प्रिपरेशन नहीं हो? आप समझिए महोदय कि हर लोग अपने घर में ही फंसते हैं और अपने घर का ही पंचायती नहीं कर पाते हैं, ऐसी ही परिस्थिति यहाँ है। अच्छा, ओके, Okay. Thank you, Sanjay Singh. That's Sanjay Singh is a candidate who was supposed to fight an election today from Prashant Kishore's party, but decided to jump ship. आपने बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन की है? जी, ऑफिशियली वापस अब बीजेपी में शामिल है ऑलरेडी? अभी मैं समर्थन दिया हूँ। अच्छा, पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कि आपने बीजेपी को समर्थन दे रहा है? ऐसा कुछ है आपके मन में? तो क्या करते, एक तरफ एनडीए था, एक तरफ महागठबंधन था, और मुंगेर विधानसभा का जो पुकार था आम जनताओं का, क्योंकि हमको तीसरी कोण बनाना था, एक तरफ यूपीए, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार थे और एनडीए के थे, तो तीसरा जनसुराज हम लोग बता रहे थे कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए आए थे, संघर्ष करने के लिए। तो जंगल राज लोग कहते हैं, तो एनडीए के पक्ष में इसलिए गए कि यहाँ के हालात वही था और समय का पुकार था। ओके,
आपको लगता है कि इतने सारे लोग आज बाहर आके मतदान दी है, रिकॉर्ड वोटिंग है 20 साल में, रिकॉर्ड टर्नआउट है, ये 60% से ज्यादा है, ये फायदा किसकी है? एनडीए को। अच्छा, so the Jan Swaraj candidate there, ladies and gentlemen, saying that it's advantage NDA with this kind of a turnout. That's exactly what we've been saying, and many have been openly saying that Prashant Kishore's entry is going to help the NDA. And this is a case point. Sanjay Singh ji, thank you for joining us here on Republic TV. He just joined, he just jumped ship completely a day before elections, decided to back the BJP candidate there and giving us reasons why he decided to quit. It's kind of a non-starter there, the Jan Swaraj party. But there was drama today in the afternoon because this man, who's also the Deputy Chief Minister, Vijay Sinha, he faced off with the RJD. He was furious because he was Giraud. First, it started with Girauding, and then they attacked him, attacked his convoy. There were slippers flung at him. All kinds of drama. The administration was pulled up. The CEC had to step in. Complete drama that unfolded in Lakhisarai in Bihar. Typical election day controversy. Here's what happened, and then we spoke to the Deputy Chief Minister on This Is Exclusive. As phase 1 of the Bihar elections commence, tensions have flared in the Lakhisarai district. Some unidentified men hurled stones and slippers at Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha's convoy in Bihar's Lakhisarai. Vijay Kumar Sinha, who is contesting from the Lakhisarai seat, claimed that the assault was carried out by RJD supporters attempting to block his Khoriari village visit. Speaking to Republic, the Deputy Chief Minister, who was Giraud during the incident, warned that bulldozer action will be taken against people who resort to violence. ये जंगल राज का दृश्य फिर दिखाई पड़ा जो 90 के दशक में होता था। प्रशासन की भी अकर्मण्यता झलकी जब वो आया था। जब इस तरह की घटना है तो वो रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, आप लोग भी ने देखा कि रोड बन रहा है, रोड 10-20 दिन पहले से ही शुरू है। तो इस तरह के घटना आज भी जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है। विजय सिन्हा के कौन लोग थे? आरजेडी के कुल लोग थे, आरजेडी के गुंडे लोग थे। ये तो जानलेवा हमला है, मतलब आपको देख रहे हैं तो एक बार आप खुद दिखाइए। ये देखिए, ये गोबर के निशान और जो शीशे पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं क्या? तो हमारा बॉडीगार्ड को लगा, दिखाइए ना, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है। Visuals of the incident showed a crowd surrounding Vijay Sinha's vehicle, shouting slogans and preventing his convoy from moving ahead. Several people can be heard chanting Murdabad slogans and stopping the BJP leader's convoy from entering the village. BJP has slammed RJD for the attack. BJP leader Ravi Shankar Prasad claimed that this proves RJD's Jungle Raj politics. देखिए, हमारी पार्टी हमारे उप मुख्यमंत्री की पीड़ा और आक्रोश के साथ पूरी खड़ी है। उस गांव में पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आरजेडी के समर्थक लोग वहां बहुत हैं। यही तो हम दिखाना चाहते हैं प्रदेश को कि सरकार का पता नहीं, लेकिन देखिए उप मुख्यमंत्री के काफिले पर चुनाव के दिन हमला होता है और उनके एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और जो एसपी का कमेंट है उसे मैं उचित नहीं मानता हूं। ये माइनर घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। Meanwhile, the EC has also taken cognizance of the situation. Chief of Election Commission Gyanesh Kumar has directed the DGP of Bihar to take immediate action against the miscreants. However, the RJD has completely denied any involvement, turning the blame on NDA, saying that they orchestrated the attack themselves for political gain. सब हम नहीं जानते, अरे वो सब अपने से करवाते हैं, वो सब अपने से करवाते हैं कि कैसू वोट बढ़े, कैसू अथी बढ़े। 2-3 बार तो हम जिता दिए तो सीएम बन गए। आप देखेंगे कि सीएम बनते हैं। Further investigation is now underway as the political heat turns up in poll-bound Bihar.
So Republic TV was live there when it happened, and this is why, maybe this is why the opposition is extremely edgy today. Have you seen the opposition come out and speak to the media? Haven't seen Tejasvi Yadav, haven't seen any of the Gathbandhan leaders speak in the second half today. They've been extremely nervous, and maybe the answers are in this graph here. In 2005, 46.5% voter turnout was seen, 2010, 52.7%, 2015, 57%, 2020, 58.7%, and in 2025, phase one, highest polling in almost 20 years. Now, is that a pro-incumbency vote or an anti-incumbency vote? Was it pro-incumbency, which means people are happy with Nitish government and they want him to continue given the mobilization that's happened, or is it an anti-incumbency vote, or people want Nitish out? We don't know. But it appears that the large number of women who came out to vote since this morning, and Nitish is extremely popular among women voters because they trust him. Perhaps the answer lies in that, on why the opposition in Bihar got extremely edgy, the Gathbandhan got edgy. Here is what Vijay Sinha, the Deputy Chief Minister of Bihar, said while speaking to Republic on this attack. बूथ का पोलिंग एजेंट आया, बुजुर्ग आदमी थे, एक नौजवान था, वो डर से आया ही नहीं। फिर हम गए तो हमको पोलिंग एजेंट बताया कि जाके मोहल्ला में दलित और अति पिछड़ा को धमका दिया है कि वोट देने जाओगे तो तुम लोग को मारपीट करेंगे, अति भयभीत किया। हमने कहा कि ठीक है, हम बूथ से निकले और गांव जाने लगे। गांव में लोगों ने घेर लिया। जब हमारा बॉडीगार्ड, गांव नाम है, हाँ, खुरियाड़ी, और जब हमारा बॉडीगार्ड उतरा तो महिला और बच्चे को आगे करके गाली गलौज, ढेला पत्थर चप्पल फेंका। ये जंगल राज का दृश्य फिर दिखाई पड़ा जो 90 के दशक में होता था। प्रशासन की भी अकर्मण्यता झलकी जब वो आया था। जब इस तरह की घटना है तो वो रोड का मामला, रोड तो बन रहा है, आप लोग भी ने देखा कि रोड बन रहा है, रोड 10-20 दिन पहले से ही शुरू है। तो इस तरह के घटना आज भी जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करना चाहता है। विजय सिन्हा के रहते कौन लोग थे? आरजेडी के कुल लोग थे, आरजेडी के गुंडे लोग थे। ये फिर जानलेवा हमला है, मतलब आपको तो देख रहे हैं तो एक बार आप खुद दिखाइए। ये देखिए, ये गोबर के निशान और जो शीशे पर पत्थरबाजी भी की गई, पत्थर भी फेंके गए हैं क्या? तो हमारा बॉडीगार्ड को लगा, दिखाइए ना, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है, बॉडीगार्ड को भी चोट लगा है, और पत्थर भी फेंके गए हैं। पत्थर भी, रोड का ही पत्थर उठा के फेंका। लेकिन डीजीपी विनय कुमार से हमारी फोन पर मैंने ही बात की, उन्होंने कहा कि ये मामूली घटना है, कोई हमला नहीं हुआ है, रोड नहीं बनने को लेकर लोग आक्रोशित। गलत उनको फीडबैक दिया गया है। रोड तो ऑलरेडी बन रहा है और सारे गांव में 173 रोड अनुशंसा हमने किया, सारा रोड बन रहा है। Getting in details, and this is our final story on This is Exclusive, on the Anil Ambani scam. We've been tracking the story, the only channel, in fact, to track the Anil Ambani scam. It was after the debate with Arnab that the story moved anywhere, with the Ministry of Corporate Affairs asking for an SFIO investigation, and now we're getting in more details that there is a new case against Anil Ambani after PMLA, a FEMA probe against Anil Ambani. He's been summoned on the 14th of November. It's linked to a road contract. Reliance Infra had subcontracted to another entity. 38 crore rupees was remitted abroad. Shavan with the details of why this matters and how big this really is. Shavan, over to you. Well, in fact, after the PMLA case, this is a Foreign Exchange Violations Act case which has been registered by the Enforcement Directorate. We have been told that search and seizure has already been carried out, following which the Enforcement Directorate has basically come across a contract that was given to Reliance Infrastructure. This was a road contract. It turns out that Reliance Infrastructure had further subcontracted this, and there is a large amount that was essentially paid to this company that was subcontracted. But apart from that, there is another transaction that has taken place, and this time the transaction actually takes place roughly about 40 crore rupees. Immediately after the disbursal of this amount, it turns out that 38 crore rupees was actually remitted abroad, which is a clear indication that there was certain diversion of funds, and that's exactly what the Enforcement Directorate is looking at. And let me also tell you this, Niranjan, that as the investigation progresses, there is a high possibility that a bigger revelation
would actually be made in the coming few days. And that in itself is going to make things much more difficult for Anil Ambani. Thank you for joining us with those inputs, Shawan. We'll be watching out for that development, and be rest assured we'll be the only channel tracking that story. That's it on this edition of This Is Exclusive. Next up, ladies and gentlemen, the Prime Minister's interaction, the full unedited interaction with the champions in blue, the women's cricket team, the winners, coming up next. Co-powered